Hello students, today we are going to do the question answers of a poem Happy Endings. Now let's start. Our first question is, what does the speaker say about the different endings of the story? Speaker यानी कवित्री कहानी के विभिन्न अंतों के बारे में क्या कहती है, क्या बताती है? Now answer is, the speaker says that all stories don't have happy endings. कवित्री कहती है कि सभी कहानियों का अंत सुखद नहीं होता. Some stories make us smile and some stories make us cry, that is, move us to tears. कुछ कहानियाँ हमें खुशी देती हैं, सुख देती हैं, और कुछ कहानियाँ हमें रुला देती हैं. There are still other stories that brings glory. Glory means fame, praise, honor. इसके अलावा कुछ और कहानियाँ हैं जो हमें ग्लोरी यानी प्रसिद्धि दिलाती हैं. So I repeat the answer. The speaker says that all stories don't have happy endings. Some stories make us smile, make us laugh, and some stories make us cry. They move us to tears. But there are still other stories that brings glory, which means fame, praise, honor. Now the second question. How does the speaker describe a day that does not have a happy ending? Speaker यानी कवित्री उस दिन का उल्लेख कैसे करती है जिस दिन का अंत सुखद नहीं होता. वो कैसे बताती है कि जिस दिन का अंत सुखद नहीं है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है. Now the answer. The speaker says that a day which does not have a happy ending brings sorrow, sadness, pain and disappointment. कवित्री कहती है कि जिस दिन का अंत सुखद नहीं होता वो अपने साथ दुख, उदासी, पीड़ा और निराशा लेकर आता है. At that day, the atmosphere means surroundings looks very dark, looks very sad. उस दिन हमें अपने आसपास का वातावरण बहुत उदास लगता है, बहुत अंधकार में लगता है. We become totally hopeless that we will never be able to get out of our problems. हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं कि हम कभी भी उन मुश्किलों से, उन दुखों से बाहर नहीं आ पाएंगे. Now I repeat the answer. The speaker says that a day which does not have a happy ending brings sorrow, sadness, pain and disappointment. At that day, the atmosphere means surroundings looks very dark, looks very sad. We become totally hopeless that we will never be able to get out of our problems. Now the third question. How, according to the speaker, can a person make their own happy ending? स्पीकर के अनुसार यानी कवित्री के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना अंत सुखद कैसे बना सकता है, कैसे खुशहाल बना सकता है. Now the answer. According to the speaker, a person can make his happy ending by the quality of his work and positive attitude.
कवित्री के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने काम करने के ढंग से और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना अंत सुखद बना सकता है, अपनी ज़िंदगी सुखमय बना सकता है. What a person does, how he does and how he feels determine his happiness. कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है और कैसे अनुभव करता है, ये सब उसकी खुशी निर्धारित करती हैं. Now I repeat the answer. According to the speaker, a person can make his happy ending by the quality of his work and positive attitude. What a person does, how he does, and how he feels determine his happiness. Now the fourth question. Explain. Just be yourself. जैसे हो वैसे रहो. Now the answer. Just be yourself means always true to yourself. Always honest to yourself. Just be yourself का मतलब है कि हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहो, हमेशा अपने प्रति सच्चे रहो. You just remain as you are. Don't pretend what you are not. तुम जैसे हो वैसे ही रहो. तुम जो नहीं हो उसे दिखाने का प्रयत्न मत करो, उसे दिखाने की कोशिश मत करो. Now answer again. Just be yourself means always true to yourself. Means always honest to yourself. You just remain as you are. Don't pretend what you are not. Now the B part. Explain. Things get out of tune. Now the answer. Things get out of tune means when things or situations are out of control. Things get out of tune means का मतलब है कि जब परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं रहती. They are not favorable. They are not in our favor. वो हमारे अनुसार नहीं है, वो हमारे अनुकूल नहीं है. Now these were the question answers. So that's all for the day.